हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियों, उनके वीरों, भाई बहनों, सबको नमस्ते एट द Arjunauvach Podcast। तो इस बार हम एक रिकैप कर रहे हैं लास्ट लॉग का, जहाँ पे मैं अपने लैब इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर सिस्टम्स के हॉरिस जॉश से कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ। तो हॉरिस जॉश फ़िलहाल आजकल बता रहे हैं यहाँ पे कि AI लीड हैं एक ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के। उन्होंने हम जैसे ही अपना बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर सिस्टम्स में, मोटा मोटा इसी समझ सकते हैं। PhD भी किया, 6 साल हो गए अभी। काफ़ी अकम्पलिश्ड रह चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया इनके साथ करके काम। तो यहाँ पे उनका एक पेपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिस पे उन्होंने काम किया था। पर ये आप समझ सकते हैं लैब इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, तो बैचलर्स के बाद सीधा PhD में एडमिशन लेना काफ़ी बड़ी बात है। और ये उनकी PhD थी बायोनिक आई में जो करी। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आके, ये उनकी बाइक है, इससे कॉलेज आता है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आइए। और क्योंकि अब मुझे एक सेमेस्टर से ज़्यादा हो गया था उनके साथ काम करे हुए, तो जो कुछ किया था उसके बारे में थोड़ी कुछ क्लैरिटी भी मिले। सो वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीवन। Thanks, Gaurav. Thanks for having me, and that's a very kind introduction. तो ये हमने किया, अभी 3 हफ्ते हुए हैं, एक संडे को बैठ के जूम पे सेशन किया। मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी, क्योंकि हॉरिस ऑलरेडी इंडस्ट्री में है और PhD काफ़ी काम किया है। तो उन्होंने मुझे FPGA का कोर्स सिखाया था, इसमें हमने काफ़ी प्रोग्रामिंग की। तो इसके बारे में लिंक्स फ़िलहाल अभी आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे गए अभी। तो उम्मीद है उनसे कुछ सीखेंगे। पर पहला क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा था वो था कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, वो क्या एक्साइटिंग कर रहे हैं। Okay. So the most recent project, I guess, externally to Monash, so this is with Envision Systems, is implementing Envision Systems की वेबसाइट analytics sensor, IoT sensor. पे अभी मैं हूँ, और once again, I was तो वहाँ पे Envision System में AI लीड हैं और we were using machine learning, AI/ML detect का ही काम कर रहे हैं। pedestrians, so that we could do counting and other statistical analysis on the movement of pedestrians in a certain area. लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। पर कैसे पहुँचे यहाँ पे, तो PhD के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि बायोनिक आई पे थी, research and develop algorithms that could be implemented on an FPGA-based system for use with visual prosthesis. So the work was part of the Monash Bionic Eye. तो यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी आई थिंक लेट स्टेज डेवलपमेंट में है। That will restore some level of vision to people that are blind. So that implant will go on the visual cortex. तो उस पर उन्होंने बताया कि जो भी एल्गोरिथम्स, प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग, ये सब स्पेशल पर्पस FPGA पे होता है। And high frame rate. So part of that work, I also developed a visual simulator that shows to normally sighted individuals what it might look like to someone that would have this implant. So actually,
तो मेरा दूसरा सवाल था उनसे कि जब वो खुद स्टूडेंट थे तो क्या उनकी क्या मोटिवेशंस थी? For me, the motivation was when I did my final year project. So the work I did in my final year project sort of led into what I chose to do उन्होंने next. बताया कि जैसे इंडिया में है वैसे ही मतलब फोर्थ ईयर प्रोजेक्ट तो Unit इम्पोर्टेंट that है covers that stuff doesn't mean that you can't और actually go वहीं into से that, right? So उनकी इंटरेस्ट शुरू हुई. थोड़ा कंपैरिजन मैंने यहाँ पे उन्हें बताया हमारा इंडिया में सिस्टम कैसे अलग है. हैंड्स ऑन एफपीजीए काम कैसे है यहाँ पे. पर क्योंकि मैंने भी सीखा ही सीखा था तो काफ़ी सिली क्वेश्चंस मैं उनसे पूछ रहा हूँ. तो अभी जो कुछ देर पहले ग्राफिक गया वो हमारा लैब में D2 बोर्ड इसके बारे में मैंने एक व्लॉग बनाया है जिसमें एफपीजीए चिप है ये वाली साइक्लोन साइक्लोन 2 करके. तो यहाँ पे हमें बताते हैं अभी आगे कि जब आप एफपीजीए पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब सब कुछ एफपीजीए करता है और भी कुछ देयर इज़ नो अदर कंट्रोल मैकेनिज्म. माने कि कोई प्रोसेसर नहीं है जो जो प्रोसेस करता है पूरा ऑर्केस्ट्रेशन हार्डवेयर पे so the ये chip एफपीजीए in पोर्ट करता है development board does not actually come with its और own वो ये भी बताते हैं. typical processor. So the processor that we used in that lab on those units is a soft core processor. So what that means is the FPGA chip it contains a lot of logic blocks that are reconfigurable. इसे वो बुला रहे हैं सॉफ्ट कोर प्रोसेसर क्योंकि हम उसे पूरे प्रोसेसर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं VHDL या Verilog. But that soft core processor is something that's defined purely in hardware description language. So it's a reconfigurable processor that's implemented using the logic blocks that are in the FPGA chip. तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी कूल है एक तरीके से अपना प्रोसेसर जैसे बताया और कुछ कंट्रोल नहीं करता जो आप लिखते हैं दैट्स द सिस्टम and that's the beauty of FPGA. In the case of that processor, though, that is an IP block that's provided by Altera. So you have a tool which is now called QSYS that you can use to construct the processor that you want. So we'll start off with ये हमारा system standard एक टूल था जिससे हम पूरा प्रोसेसर रेंज अरेंज करते हैं उसकी कनेक्शन सारे QSYS मैंने कवर किया हुआ है पहले ये वाला एक ब्लॉग में अगर आप देखना चाहें. तो ये सारा बताया उन्होंने कि रिकन्फिगरेबल है सबका सब. और उससे मुझे याद आया कि हमने एक और सब्जेक्ट किया था जिसके बारे में भी एक ब्लॉग पहले बना हुआ है जहाँ पे हम ये पीस ऑफ बोर्ड करके यूज़ करते थे. पर इसके बारे में मुझे कुछ सवाल थे जो अभी दिमाग में थे क्योंकि एनालॉग और डिजिटल में कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें उसके बारे में और समझाया था कि so with the PSOC, you can think of it as a processor. PSOC में मगर थोड़ा अलग था क्योंकि FPGA है but there is a processor also. So using the FPGA part of it, you can offload some of the processing tasks from the microcontroller processor itself to dedicated तो आप or reconfigurable जो कुछ FPGA का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप
कुछ चीज़ फास्ट कर सकता है, क्योंकि वो और कुछ करता नहीं है, फिर ये सिर्फ जो आपने करने को बोला वही करता है एज अपोज टू प्रोसेसर. तो यहाँ पे एक ऑनबोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग होती है बिटवीन प्रोसेसर एंड FPGA में. पर यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए डिफ्रेंशिएट किया कि पीस ऑफ बोर्ड जो था अभी भी है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर एनालॉग सर्किट्स को रिकन्फिगरेबल एनालॉग सर्किट्स बनाना चाहे. All FPGAs have a reconfigurable interconnect. Okay, it's often called a switch fabric. So that can be connected up to the microcontroller section of the PSOC in different ways. Yeah. What would be an example of, an example of a digital reconfigurable block would be like gates, Yeah, so at the lowest level, a logic element on an FPGA would implement some low-level logic gate, like an AND or an OR, XOR, things like that. Those simple logic blocks together, you can create more complex functions such as multiplexers, comparators. So I think we covered most of the questions really that I had for you. But I think you've given us a little bit more of a flavor of your own journey. So the one thing I caught today was how your PhD built on the work that you did in your final year, even in countries where there is more of less of a hands-on approach to studies. I know that it is stressed that students do a final year project. Like, if you were to look back and say things that I could have done differently, and therefore, how could we as students Good advice. What advice would you have? For final year students. I know that's a really big question. No, that's all right. I think एंड में उन्होंने यही कहा कि ऑफ कोर्स जैसे इंडिया में भी होता है, आपने EC करी है बट यू कैन स्विच ओवर स्ट्रीम्स, डजंट मीन आप कुछ और नया नहीं सीख सकते. set out to actually go ahead and build something from scratch, you quickly find out पर प्रोजेक्ट्स करना ज़रूरी है, just a lot of सिर्फ लैब्स नहीं. getting working that you've built. इंडिया में हम माइनर प्रोजेक्ट करते हैं, मेजर प्रोजेक्ट करते हैं, पर the PhD was something that sort of में हम happened naturally for you then, was it? Like it was माइनर just like you मेजर said, प्रोजेक्ट करते your हैं, बट PhD was हर an extension कोर्स of के the FYP. So हर कोर्स में एक दो Yeah, प्रोजेक्ट्स for करते हैं हम. me, look, personally, when I 6-8 finished my प्रोजेक्ट undergrad, सेमेस्टर के. I didn't think I was ready to go out into industry and work just yet. मैंने इनके बारे में So ब्लॉग्स I बनाए thought हैं, about other do go and check pathways them that out. I could take. So I thought about doing some postgraduate studies. Initially, I thought about doing just the masters, but then after some discussions with my final year project supervisor and with my family and friends, I decided to go ahead for with the PhD. Anyway, I asked him कि other part the students might उन्होंने बताया कि मैंने ultimately I consulted my family and friends, go back into academics, lecturers, instructors, experiences maybe with your other डिसीजन लेने के friends लिए who कि क्या did in करें. fact बट मैंने कहा आपके try ज़रूर their फ्रेंड्स luck रहे out होंगे in the जिन्होंने industry immediately after एकेडमिक्स में undergrad. वापस Can you नहीं गए envision that and इंडस्ट्री that ज्वाइन route, करी what would आफ्टर have बैचलर्स. you have done if उनकी you'd gone एक्सपीरियंस down शेयर that करें way? तो उन्होंने Yeah, so ultimately यही I बताया mean, कि for me, my embedded interests lie systems more of in course sort of हम सब programming जानते हैं and EC के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, the mix between hardware and एंड software. उनके फ्रेंड्स वहीं गए. I think I would have looked for probably some kind of embedded programming jobs or roles that had a bit of hardware in it as well, so something tangible. That yeah, I think it's good to try things, and then if you don't like it, think about what you might like, and then go for that, even if it means changing completely. Your key message here was, to stay Anyway, hands-on, and that's certainly something that I students hope worldwide, this was useful आपके लिए भी, and back in India, maybe can even try to emulate from you. we So, share something just Thanks कुछ so नया much रहा हो. for all of that. Thanks so much for sharing your journey. Thanks so much That's for okay. the advice. Yeah, I hope I answered your questions well, and I provided something useful for you. So this has been great. My first interview, and that too with a PhD student from Monash, was an absolute honor. With that, this is an end to another episode of the Arjunauvach Podcast. Thanks everybody for listening, and we'll see you again in another episode.